Assalamu alaikum dear students. Welcome to the discussion of ninth chemistry test number 11. First of all, we will discuss the MCQs. First MCQs is radius of carbon atom is. Options are 77 picometer, 154 picometer, 88 picometer, 152 picometers. Radius of an atom is defined as half of the distance between the nuclei of two bonded atoms, and you know the distance between the two nuclei of carbon atoms is 154 picometer. When you divide it by 2, it will be the half, and it will be equal to 77 picometer. So option A will be correct. The radius of carbon atom will be equal to 77 picometer. Second, MCQs point out the incorrect statement about electron affinity. Electron affinity is the amount of energy released when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom. Electron affinity always increases from left to right in a period and decreases from top to bottom in a group. So options are, it is measured in kilojoule per mole, that is correct, but we will tick that answer, that will be incorrect, because जो ऑप्शन हमारे पास जो स्टेम है क्वेश्चन की, उसमें ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपने टिक करना है. Second है, it involves a release of energy, that is correct. C है, it decrease in a period, ये fall है because it increase in a period, so option C will be correct. D option के अंदर it decreases in a group, तो ये भी ऑप्शन ठीक है. सो हम C को टिक करेंगे क्योंकि साल के अंदर उसने कहा है कि आपने गलत स्टेटमेंट को जो है वो टिक करना है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है. Third one has the least value of shielding effect: lithium, sodium, potassium, rubidium. You know the lithium is at the top in the group that belongs to alkali metals, and it has least number of shells among this group. Sodium, potassium, rubidium, so on, these have maximum number of shells, more number of shells as compared to lithium. So you know that the shielding effect is directly proportional to the number of shells. More the number of shells, more the shielding effect. So lithium has least number of shells among all the elements given here. So lithium should have least shielding effect, because shielding effect increases down the group, so number of shells are increasing. That is the reason that lithium should have least shielding effect, so option A will be correct. बाकी सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, उनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है. जो लिथियम है इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स सबसे कम है, इसलिए इसके अंदर सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट होगा. Next, which one of the following halogen has lowest electronegativity? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Fluorine, you know, that is the most electronegative element in the periodic table, and electronegativity decreases from top to bottom in a group. Fluorine is a most electronegative element. Chlorine is less electronegative than fluorine. Bromine is less electronegative than chlorine and fluorine, and iodine is least electronegative among all the halogens in the group. So option D will be correct. और यहाँ पर वैल्यूज़ भी गिवन है. फ्लोरीन 4.0 है, क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3.0 है, एंड आयोडीन 2.7. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. Covalent bond involves the donation of electron, acceptance of electron, sharing of electron, repulsion of electron. जहाँ पर donation और acceptance की बात आ जाती है, वो ionic bond बन जाता है, because ionic bond is defined as the type of bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another atom. But when we are talking about the covalent bond, it will be by the sharing of electron, mutual sharing of electron. Both the atoms will share the electrons and the bond will form, so option C will be correct. After attaining one electron, chlorine atom attains the electronic configuration of which noble gas? Chlorine has 17 electron in its has 17 electron. Then by adding the one electron, it will be like that argon having 18 electron and 8 electron in the valence shell. So its electronic configuration resembles like that argon, 2 plus 8 plus 8.
like that. It is shown in the figure. You can see it. When electron is added in the chlorine atom, then its electronic configuration will be like that. Argon, option C will be correct. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, हीलियम का 2 है, क्रिप्टॉन हायर एलिमेंट में आ जाता है, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. Next, the force among the molecule is covalent force, metallic force, intermolecular force, ionic force. जो covalent, metallic और ionic forces हैं ये bond वाली forces हैं. Among the molecules हमेशा intermolecular forces होती हैं और इसके अंदर different types होती हैं, dipole, dipole, ion dipole, London dispersion forces, ये सारी की सारी इसमें आती हैं. So बाकी जितनी भी forces हैं सब की सब bonding वाली forces हैं, chemical bond वाली forces हैं. जो C option में है intermolecular forces, that will be the correct option because intermolecular forces are present among the molecules. नेक्स्ट वन, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेफिनेटली बहुत ईजी है. आपको पता है कि जो वाटर होता है वो डेंस होता है, उसके मालिक्यूल्स करीब होते हैं, जबकि जो आइस होती है उसके मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है आइस की डेंसिटी, और जबकि वाटर की 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर. So water is denser than ice. Options are ice is denser than water, that is wrong. Ice is crystalline in nature, that is wrong. Water molecules move randomly, ये तो definitely हमें पता है, but it doesn't affect upon the nature or anything else like that. So हम ये देख रहे हैं कि वाटर डेंसर है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की डेंसिटी कम है, उसके दरमियान स्पेसेस हैं, इस वजह से बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है, उसके अंदर एक रेगुलर पैटर्न आ जाता है. So water is denser than ice, that is the reason ice floats on water. Option C will be correct. Water has bond, polar, non-polar, covalent, both A and C. There is covalent bond between hydrogen and oxygen in water molecule, but it will be polar because there is the difference between the electronegativity of oxygen and hydrogen. So A is correct and C is also correct. So D option, A and C will be correct. Which of the following contain non-polar covalent bond? H2O, HCl, H2, NH3. You know, when when there is a covalent bond and the bonded atoms will be same, so there is no difference in the electronegativity. So if the difference of electronegativity is 0, the bond should be non-polar. Always remember that the bond between two same atom, homogeneous atom, will be non-polar. So H2 will be correct. H2O is polar. HCl is polar. Definitely the difference between the electronegativity of chlorine and hydrogen. NH3, there is also hydrogen bonding, difference between hydrogen and nitrogen electronegativity. So definitely you have to remember that the bond between two similar atoms will be non-polar. So option C will be correct. Which pair has single covalent bond? CH4 C2H2. यहाँ पर मीथेन और इथाइन है, इथाइन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है. CH4 एंड CH3Cl, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड और मीथेन है, यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है. CH4 एंड C2H4, यहाँ पर मीथेन और इथीन है. CH4 एंड CO2, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड है. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. यहाँ पर बताया गया है क्लोरोफॉर्म और मीथेन का जो स्ट्रक्चर है दोनों के अंदर सिंगल बॉन्ड है. शॉर्ट आंसर्स की तरफ चलते हैं. डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गिव इट्स स्ट्रेंथ्स इन ग्रुप. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ट्रेंड इन पीरियड, डेफिनेटली आपको पता है कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसकी वजह एक तो चार्ज बढ़ता है और दूसरा जो साइज होता है वो कम होता है. व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? The electrons present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence electron. यूँ समझ लीजिए कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो मौजूद और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्ड करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान में और शील्ड बना देते हैं, तह बना देते हैं, लेयर बना देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं. इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम दिया जाता है.
Define chemical bond. Write down the names of its type. Chemical bond is the force of attraction between atoms that holds them together in a substance. There are different types of chemical bond: ionic bond, covalent bond, dative covalent bond or coordinate covalent bond, and metallic bond. Metallic bond को define करना है आपने. The bond which is formed between metal atoms, positively charged ions due to mobile or free electrons. बेसिकली क्या होता है कि वही मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना देते हैं. कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल एटम के साथ फिक्स नहीं होता, हर जगह पे मूव कर रहे होते हैं और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको नाम दिया जाता है मेटेलिक बॉन्ड का. Why is the boiling point of water is higher than alcohol? Definitely, you know that the boiling point of alcohol is 78 degree and the boiling point of water is 100 degree centigrade. So the difference is due to hydrogen bonding, the strong hydrogen bonding that is present in water molecule and that is absent in alcohol. So that is the reason that boiling point of water is higher than alcohol. लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है, फिर उसका ट्रेंड बताना है. आयनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. फिर इसकी आपने एक एग्जांपल देनी है, फिर उसका ट्रेंड बताना है. पीरियड के अंदर वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है. जो ग्रुप है उसके टॉप टू बॉटम जो है डेफिनेटली डिक्रीज़ होती है ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स, इंक्रीज़ इन द साइज ऑफ एटम. और जो है एक पीरियड के अंदर वो जो है इंक्रीज़ होती है. इंक्रीज़ होने की वजह ये है कि उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उसका साइज़ कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है. बी पार्ट के अंदर कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है और सिंगल और डबल कोवलेंट बॉन्ड को आपने बताना है. कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है. दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. अगर वो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा. अगर दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा. अगर दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा. यहाँ पर एग्जांपल्स भी आपने लाजमी लिखनी है बिकॉज दिस इज़ एक्सटेंसिव क्वेश्चन एंड यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर सो दैट आपके जो नंबर हैं वो डिडक्ट ना हो. HCl की दे सकते हैं, मीथेन की, हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, ये सारी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं. डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी आपने उसको डिफाइन करना है. फिर आप ऑक्सीजन की एग्जांपल दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे सकते हैं, ईथीन की एग्जांपल दे सकते हैं. ये सारी की सारी जो हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं. यहाँ पर जो पूछा गया है वही लिखना है आपने. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करना. ये आपकी डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है. इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दैट you can contact me on my WhatsApp number. You can ask any question. Have a nice day. Take care and Allah Hafiz.